Yes, welcome everyone to the fifth session of this course. So today we'll be focusing mainly on the statutory regulations and some key income tax provisions which are relevant for non-profits. Okay, so there are many small topics that will get covered today. All are quite relevant for non-profits and specifically from income tax angle. There are also certain provisions that we'll be discussing in the session number six pertain to other laws which are relevant for non-profits. But today we are going to talk only about income tax laws. Okay, so these are the two topics that we'll be covering. One is a small topic which is on legal structures for non-profits and key income tax provision. Okay, so when we talk about legal structures for non-profits, can somebody tell me what are the three main legal structures that are allowed in India? ऐसे कौन से लीगल स्ट्रक्चर्स है जो एक नॉन प्रॉफिट रन कर सकता है एज नो लीगली इन इंडिया? Society and Section 8. राइट राइट या इन सेक्शन मेट आर यू अवेयर उसमें कोई और भी टाइप्स है? आर देयर एनी मल्टीपल वेज इन विच अ सेक्शन इट कैन बी ओपन और देयर इज जस्ट वन वे? एनी आइडिया अबाउट दैट? But idea नहीं होगी. ओके, या सो एज यू राइटली सेड, एक होता है सेक्शन एट कंपनी, दूसरी होती है ट्रस्ट या फिर एज अ सोसाइटी. सो व्हेन वी टॉक अबाउट सेक्शन एट कंपनी, under the Companies Act 2013, there are two types of Section 8 companies. One is company limited by shares and another is limited by guarantee. Okay, so limited by guarantee के अपने खुद के एडवांटेजेस है. जैसे अभी कुछ साल पहले एक रूल आया था जिसमें शेयर्स डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में अभी मैंडेटरी हुआ है, विद some exceptions for small companies, but unfortunately non-profits are not under the exception criteria. So even if a non-profit section 8 company which is limited by shares, इनको भी मैंडेटरी है उनके शेयर्स कन्वर्ट कर नो फॉर कन्वर्टिंग द शेयर्स इनटू डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म. ओके, प्लस लिमिटेड बाय गारंटी में स्टार्टिंग में कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस करना मैंडेटरी नहीं होता. यू कैन स्टार्ट अ कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, विदाउट इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल. ऑफ कोर्स देयर इज अ लिमिटेड गारंटी, वेयर जहाँ पे जो जो सिग्नेटरीज रहते हैं मेमोरेंडम को, दे दे आर लायबल ओनली टू अ सर्टन थ्रेशोल्ड लिमिट under such kind of company, जो in the time of liquidation or at the time of no closure, that's the maximum liability that the trustees are liable to introduce in the company. So that is the primary nature of company limited by guarantee. फिर होता है ट्रस्ट. जैसे नो इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1880 के अंडर एक ट्रस्ट रजिस्टर हो सकता है. इसमें भी हर एक कोई कोई स्टेट्स में स्पेसिफिक स्टेट लेवल लॉज होते हैं. जैसे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट है 1950 का, विच इज एप्लीकेबल. सो ऑल द ट्रस्ट विच आर रजिस्टर्ड इन महाराष्ट्र आर गवर्न बाय स्टेट स्पेसिफिक लॉ. अदरवाइज इन सम स्टेट्स देयर इज अ नेशनल इंडियन ट्रस्ट एक्ट अंडर विच द रजिस्ट्रेशन कैन हैपन. एंड देन देयर इज सोसाइटीज एक्ट विच इज अगेन 1860 का, जिसमें एज अ सोसाइटी भी एक नॉन प्रॉफिट ओपन अप हो सकती है. एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? ओके, तो जब भी एक नॉन प्रॉफिट ओपन होता है, व्हाट आर द टिपिकल डॉक्यूमेंट्स दैट आर नेसेसरी? कैन समबडी अनम्यूट एंड जस्ट नेम सर्टेन डॉक्यूमेंट्स? क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी होते हैं व्हेन द नॉन प्रॉफिट इज स्टार्टिंग? Memorandum of association or a trust deed. करेक्ट करेक्ट, दैट्स राइट, दैट्स द फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स. एनी अदर डॉक्यूमेंट्स कैन एनीबडी एल्स शेयर? Otoelle, ATG, and the AOF. ओके, राइट. सो इट बिगिंस विद, एज राइटली सेड, मेमोरेंडम और अ ट्रस्ट डीड. अगर आप सेक्शन 8 कंपनी हो तो एक एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एओए भी होता है, विच गवर्न्स द इंटरनल, नो विच इज फॉर इंटरनली गवर्निंग द ऑर्गेनाइजेशन. देन देर इज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, अगेन फॉर सेक्शन 8 कंपनी. सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट होता है. देन देर इज पैन फॉर इनकम टैक्स.
टैन होता है, जैसे हम टीडीएस रिटर्न्स वगैरह उससे फाइल कर सकते हैं. देर इज दर्पण आईडी विच इज अगेन मैंडेटरी नाउ फॉर नॉन प्रॉफिट्स, विच कम्स अंडर नीति आयोग. 12 ATG हो गया. CSR 1 होता है विच यू कैन अप्लाई आफ्टर 3 years, but again which is relevant for non-profit. And then there is FCRA if you are wanting to receive foreign contributions from outside of India. Okay, these are the typical key documents required for a non-profit. Okay, now when we talk about memorandum of association or the trust deed, जो governing document होता है, can anybody tell me what is the what clauses define what activities an NGO is permitted or restricted to do? कौन सा क्लॉज रेलेवेंट है एमओए और ट्रस्ट डीड में से विच गिव्स डायरेक्शन फॉर अ नॉन प्रॉफिट? बेसिकली ये क्लॉज दिस क्लॉज डिफाइंस व्हाट an NGO can do, and also it can be restricted in nature, if the trust deed says it cannot do certain things. What is that clause? What is that? Object clause. Right. Absolutely. So object clause is very critical when you talk about the trust deed or the constituent document. So what is it first of all? So object clause defines the permissible scope of activity. जो NGO कर सकता है, permitted है करने के लिए, it is defined under objects clause. Typically, this clause is divided into two parts. One is main objects, and there are certain ancillary objects which are listed in the trust deed itself. ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट सेक्शन कंपनीज एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन भी होता है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, which lays down the guidelines on which a company can operate. It is more to do with internal frameworks and internal structure based on which the NGO has to follow. Okay, now why is this so important? Objects clause. So, so an NPO is required to undertake activities only as per the objects clause defined in the trust deed. Agar if there is any failure in adhering to those objects clause, then it is kind of technically it's a breach of trust, and there are consequences related to that, which can also lead to cancellation of your registration of the non-profit if an NGO is not following or not undertaking works as per its objects clause. Okay, so there are serious repercussions if somebody is not some if an NGO is not following their objects as stated in the objects clause. Okay, the best practices here is that we all look at our objects clause, we being the accountants and also somewhere responsible for compliances internally in our NGOs. It is important कि हम भी हमारा एक MOA या ट्रस्ट डीड रिव्यू करके हमारे ऑब्जेक्ट्स क्लॉज देखें, so that all our activities are somewhere aligned as per the allowed or permitted activities under which our NGO works. अगर कोई ऐसे एक्टिविटीज हम करते हैं या करना चाहते हैं जो हमारे ऑब्जेक्ट्स क्लॉज में नहीं दिया गया हो, सो इट इज स्ट्रांगली एडवाइजेबल टू एक्सपांड द स्कोप ऑफ द ऑब्जेक्ट्स by undertaking amendments in your trust deed. Okay, there are certain legal procedures to be followed with respect to the governing laws to amend your trust deed or your MOA. And of course, then those procedures need to be followed. तो आप में से किसने आपका ट्रस्ट डीड देखा है आपके नॉन प्रॉफिट का? कैन यू जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स इफ यू हैव ऑलरेडी सीन योर ट्रस्ट डीड एंड द ऑब्जेक्ट्स क्लॉज, एंड इफ यू हैव नॉट सीन कैन यू जस्ट टाइप नो, यू हैव नेवर सीन सो फार. ओके, Ankush, Anurag, Kiran. Yes, they have seen. Israel, no. Okay. Is there anybody else who has not seen? Okay. There are quite a few. So yeah, it is strongly advisable कि आप अब भी आपका ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट स्लॉट एक बार रीड करें, एंड जस्ट see internally whether whether your NGO is following the activities that it is doing as per the objects clause, or something is not really there and you are doing which is totally outside of your objects. It's important कि आप ये review करके एक evaluation करें. If there are any questions or doubts, you should definitely reach out to your to senior management or maybe your auditors who can guide you on how to go about it subsequently.
Okay, Ankush has seen just yesterday. Great, great, Ankush. Sure. So that was about the legal structures. Okay. Now let's talk about income tax provisions. Okay. When let's start with 12 and 80G, which is very critical Cohort, for a uh, non-profit. Yes. I just want to highlight something very quick from an income tax perspective also, that now the consequence of doing anything which is outside your objects is straight away cancellation of your 12A, which is why this activity that Dohit is highlighting is extremely important. Any new object that you pick, even the old ones, ensure that it is captured in its entirety under your objects. Thank you. Yes. Yes. Absolutely. Yeah. And sorry, one last thing, there is no minimum threshold कि आप 10 करोड़ रुपए स्पेंड कर रहे हो और आपने सिर्फ लाख रुपए का कुछ आउटसाइड द ऑब्जेक्ट किया, उसमें कोई मटेरियलिटी नहीं है। आपने 100 रुपए का भी काम अगर आउटसाइड ऑब्जेक्ट किया तो, और अगर वो सीआईटी ने या इनकम टैक्स ऑफिसर ने देखा है, दे आर विद इन देयर राइट्स टू कैंसिल योर registration. And this has happened, we have seen this in a very recent case where they have picked up an organization for doing something outside their object. Right. Right. Thanks. Thanks, Ravi, for sharing that. Okay. So let's talk about 12A and 80G. कोई बता पाएगा 12A क्यों रेलेवेंट है एक नॉन प्रॉफिट को? हम सब जगह देखते हैं, नो, सब लोग मांगते रहते हैं हमारे से 12A सर्टिफिकेट देना है बिफोर गिविंग एनी फंड्स, स्पेशली द बिगर डोनर्स. व्हाट इज 12A एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? एनीवन? कोई अनम्यूट करके बता पाएगा? Basically, tax exemption के लिए. Otherwise, the income is taxable. ओके. ओके. राइट, राइट, या. सो दैट इज द प्राइमरी रीजन. So NGO registered under 12A gets tax exemption under the Income Tax Act, provided there are certain conditions that are met by the non-profit. अगर 12A नहीं है, then technically जो भी surplus और profits generate होते हैं या surplus generate होते हैं, NGO will have to end up paying tax on it, whatever surplus. Currently, because we have 12A, we usually carry forward the surplus without paying any tax. Of course, there are certain rules that need to be adhered to, but that's the fundamental reason why 12A is so important for a non-profit, कि donations पे tax भरना नहीं पड़ता. Okay, now let's look at what are the main conditions to get exemption when we talk about 12A. Okay. First is a registered non-profit can claim exemption only if it applies at least 85% of the income that it generates during the year towards charitable objects. Okay, as per its MOA in India. So this is the primary condition. पहले तो 85% जो भी इनकम जनरेट होता है उसका 85% इट इज मैंडेटरी टू बी अप्लाइड टुवर्ड्स चैरिटेबल एक्टिविटीज. व्हेन आई से अप्लाई, इट शुड बी रेड एज यूटिलाइज्ड. आपको यूटिलाइज करना होता है एटलीस्ट 85% ऑफ द इनकम दैट गेट्स जनरेटेड. ओके. नाउ व्हाट हैपेंस अगर आपका एनजीओ 85% से कम यूटिलाइज करता है फॉर दैट ईयर? ओके. तो उसमें ऐसे प्रोविजन दिया गया है कि जो भी शॉर्टफॉल है दैट यू कैन कैरी फॉरवर्ड टू बी यूटिलाइज और टू बी अप्लाइड इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स. देर आर टू ऑप्शंस. एक तो आप 1 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, जिसके लिए आपको फॉर्म 9A फिल करना पड़ता है, या फिर आप 5 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो बाय गिविंग अ स्पेसिफिक रीजन कि आप ये क्यों कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो. ओके. उसके लिए आपको फॉर्म 10 फाइल करना पड़ता है ऑनलाइन. Okay, is this clear? Is this fundamental condition clear of 85%? Anybody has any questions with respect to this 85% rule? Okay, so all are Sir, aware of it. one question, sir. Sorry. Yes, yes, This yes, yes. सर कई बार ना कुछ फंडर्स को हम 12A देते हैं, तो कुछ लोग तो हमें ना टीडीएस ग्रांट के ऊपर जो टीडीएस डिडक्शन होता है उसमें वो लोग नहीं काटते हैं, बट कुछ लोग 12A देने के बावजूद भी वो कहते हैं कि नहीं हम तो टीडीएस काटेंगे. जैसे मेरे साथ में 2-3 फंडर्स थे
जो कुछ गवर्नमेंट बॉडीज थी, उन्होंने 12A देने के बावजूद भी टीडीएस डिडक्ट किया था। और जो हम्म। कॉरपोरेट फंडिंग पार्टनर्स हैं वो लोग 12A देने के बाद टीडीएस डिडक्शन नहीं करते। सर इसमें थोड़ा सा आपसे समझना था ऐसा क्यों करते हैं ये लोग। राइट, राइट। या सो अभी ये जो टीडीएस डिडक्शन का जो क्वेश्चन है ना, इट इज मोर टू डू विद सामने वाली पार्टी क्या स्टैंड ले रही है इंटरनली। तो टिपिकली ग्रांट्स और डोनेशंस पे टीडीएस नहीं काटना चाहिए, बिकॉज देर इज नो सर्विस दैट द एनजीओ इज गिविंग, राइट। देर इज नो सर्विस एलिमेंट इन द फर्स्ट प्लेस, एंड हमको फी नहीं मिल रहा है ताकि हमको एक वॉलेंटरी ग्रांट मिल रहा है। अभी गवर्नमेंट एजेंसी क्यों काट रहे हैं ये समझने के आपके केस में, उसके लिए एक बार समझना पड़ेगा आपका एमओयू कैसे ड्राफ्टेड है, उसके अग्रीमेंट्स कैसे है, व्हाट आर द वर्ड्स दैट यू आर यूजिंग, एंड हाउ दे आर ट्रीटिंग such kind of expense, such kind of payment that they are making to your NGO। एक बार वो समझना पड़ेगा व्हाई दे आर डूइंग दैट। बट अगर वो ग्रांट और डोनेशन है तो आइडियली नहीं काटना चाहिए। ओके। अभी यार यू कैन, आई डोंट नो आपने वैसे कॉन्वर्सेशंस किए हैं क्या आपके जो भी काउंटर पार्ट्स है एट द गवर्नमेंट ऑफिसेस, एंड ये रीजनिंग। यस, it was sir, yeah, this was in 1920 and 21-22 year financial year, where ओके। we have received some हम्म। government projects with Ambuja Foundation। तो राइट, दैट तो जिसको आप आरएससीपी करके गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट थी, वो उन्होंने राइट। डिडक्ट किया था। उसी के बाद एक फॉरेन फंडिंग था हमारा स्लम बर्गर के नाम से। हाँ। तो उनका लोकल करेंसी में फंड आता है और उसी के बेस पे उन्होंने हमें प्रोजेक्ट दिया था। तो उन्होंने भी 16 लाख के ऊपर कुछ 30 कुछ हम्म। डिडक्शंस हमारे किए थे। राइट। तो इसका आपको ना वो एमओए से एमओयू जो साइन होता है दोनों पार्टीज के हम्म, बीच में, उसमें से थोड़ा इवेल्युएट करना पड़ेगा कि अगर वो लोग टीडीएस काट रहे हैं दैट मीन्स दे आर ट्रीटिंग इट एज सर्विस agreement and not a grant agreement। हम्म, Ideally that is the reason that they are deducting TDS. So again it will totally depend on what is the language used in that agreement to really comment on this, but as a thumb rule अगर हम्म। ग्रांट डोनेशन है तो टीडीएस नहीं कटता। ओनली सर्विस एलिमेंट जब ये आता है दैट इज व्हेन द टीडीएस बिकम्स एप्लीकेबल। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। यस। ओके, सो ये 85% रूल के अलावा एक और इम्पोर्टेंट कंडीशन है कि आप एनजीओ उनका आईटीआर और ऑडिट रिपोर्ट टाइम के अंदर फाइल करे बिफोर द ड्यू डेट्स। सो नो लाइक 30th September and 31st October the respective due dates for tax audit report and ITR। Even this is a critical condition to be followed। Okay, now let's look at, since we spoke about 12A registration, let's also talk about cancellation। So has anybody seen any NGOs 12A getting cancelled, और किस रीजन से कैंसिल हुआ रहेगा? किसी ने एक्सपीरियंस किया है ये चीज? You need not mention the name of the organization, but have you come across any organization whose 12A was cancelled? Okay, and what any particular reason do you recollect or do you know? क्या reasons हो सकते हैं cancellation के लिए? One was not renewed on time. Okay, correct. Yeah, that is also one of the reasons. Yes. Anyone else? Any other reasons can think of? Unauthorized income or unappropriate income which we have seen in our balance, so in our balance sheet, और जो कि उस एक्सपेंस को जस्टिफाई नहीं कर पा रही हो, और ऐसा वन टाइम नहीं होके कई बार अगर दिखता है, so it can be cancellation in that situation। Okay, okay, okay. Yeah, so let's look at the typical cancellation reasons. So one is if there is a violation in any of the conditions under which registration was granted। ना आपके 12A और 80G रजिस्ट्रेशन जो आते हैं, लेट्स टॉक अबाउट 12A फॉर नाउ। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में नीचे कंडीशंस लिखे रहते हैं। ओके, इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी फॉलो ऑल दोस रजिस्ट्रेशन कंडीशंस बिकॉज द रजिस्ट्रेशन हैज बीन ग्रांटेड बेस्ड ऑन basis the assumption that that conditions will be met by the NGO। Okay, if there is any violation of any of those conditions, it can lead to cancellation। और एल्स अगर कोई ऐसी एक्टिविटीज आप करते हो जो आउटसाइड ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्लॉज हो, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, रवि ने भी एम्फोसाइज किया था, इफ यू आर डूइंग एनी एक्टिविटीज विच आर आउटसाइड योर एमओए, बीट with respect to nature of activities or say geography or you know yeah multiple other reasons, वो भी कैंसिलेशन का रीजन हो सकता है।
or activities which are undertaken to benefit any particular religious community or caste. ओके, अगर 12A रिन्यू नहीं किया हो और एल्स रीवैलिडेट नहीं किया हो आफ्टर चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट्स, आपके ऑब्जेक्ट्स तो चेंज हो गए एमओए में, लेकिन आपने इनकम टैक्स में उसको रीवैलिडेट नहीं किया हो, बाय इंटीमेटिंग एंड टेकिंग अप्रूवल फ्रॉम योर असेसिंग ऑफिसर, इवन दैट कैन लीड टू कैंसिलेशन ऑफ योर 12A. And also there could be reason like, income or assets are used for private benefit of the trustees or related parties of the trustees or for personal gains. These are the typical reasons why a registration can get cancelled for a non-profit. Okay. अभी इसके implications भी काफी severe है. If a non-profit loses its registration, तो the entire corpus or entire amount that is नोटिफिकेशन आता यार, ये पता नहीं क्या है। there of the non-profit is liable to an exit tax of around 40%. Okay. And this can also lead to reopening of your past assessments by the income tax officer. जैसे कैंसिल होता है, टैक्स तो भरना ही है, लेकिन past scrutiny or assessments भी, it can trigger to lot of other things like opening of past assessments. So these are the typical implications when it comes to cancellation of non-profits. Okay. Okay, now a question here. अगर आपका 12A कैंसिल होता है, डज इट मीन योर 80G इज ऑटोमेटिकली कैंसिल्ड? यस, नो? कैन यू जस्ट टाइप इट इन द चैट बॉक्स? अगर आपका 12A कैंसिल होता है तो ऑटोमेटिकली 80G कैंसिल होता है या ऑटोमेटिकली नहीं होता है? ओके, करण, रानी, इसराइल, यस, ऑल आर यस. यस, दैट्स राइट. अगर आपका 12A कैंसिल होता है तो 80G भी ऑटोमेटिकली आपका कैंसिल होगा. ओके. नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 80G, how much is the tax exemption that can be claimed by the donor who is giving donation to a who is giving donation? Is it 50% of the amount that the donor donates? Is it 100%, or it could be both 50 or 100% depending on the case? Can you just type it in the chat box, either one, two, or three option? C. Okay, both 50% and 100%. Okay. Okay, perfect. Yes, that's right. There are some cases in which 100% donations भी claim कर सकते हैं donors. Like donation given to say National Defense Fund या ये PM Cares Fund या Chief Minister's Relief Fund for each of the states. फिर उसके बाद क्लीन गंगा फंड है, स्वच्छ भारत कोष है. ये सारे फंड्स में कोई डोनेशन देता है तो उसमें 100% क्लेम कर सकते हैं. लेकिन इसके अलावा जो नॉन प्रॉफिट्स है, जैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशंस को अगर कोई डोनेशन देता है तो डोनर विल गेट ओनली 50% ऑफ द अमाउंट दैट दे डोनेट टू अवर नॉन प्रॉफिट. ओके, सो दैट्स द रूल विद रिस्पेक्ट टू 80G. 100% डोनेशन सारे ऑर्गेनाइजेशन को नहीं मिलता. देर आर ओनली स्पेसिफिक फंड्स, गवर्नमेंट फंड्स, उसके अलावा 50% ही क्लेम कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट 80G नाउ. 80G क्यों इंपॉर्टेंट है? Can you just unmute? Can somebody just unmute? Why is 80G just like we discussed about 12A? 80G का क्या बेनिफिट होता है? Why do donors insist on 80G for a non-profit to have 80G? Donor gets deduction under Section 80G in their income tax computation if the donee, that means if the trust or Section 8 company has 80G approval from the income tax. Right, right, right. Correct, correct. So in today's today's case, if typically if an individual donor is opting for old tax regime, okay, we will talk briefly about new tax, old tax also in the subsequent slides, but those who are already aware of this, अगर वो डिडक्शंस क्लेम करना चाहते हैं उनके आईटीआर में, then without 80G, without the non-profit having 80G certificate, the non-profit won't be able to pass on the benefit to the donor. Okay,
तो डोनर को टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है अप टू अराउंड 15 ऑफ 50% ऑफ द अमाउंट डोनेटेड बिकॉज ऑफ एटीजी रजिस्ट्रेशन दैट अ नॉन प्रॉफिट हैज. Okay. Even most of the funders insist for not only 12A but also ATC as a prerequisite for giving donations at the end. Corporates also can claim ATC benefit from the CSR donations that they give. वो भी उनको allowed है. So these are typical benefits of non-profit of no having ATC by non-profits. Okay, how to avail tax benefit is that we all must be adhering to this timelines of 31st May, right? When जब भी हम सारे डोनर डिटेल्स फाइल करते हैं इन फॉर्म 10BD, so that form 10BE can be downloaded subsequently and issued to all the donors, जिसके तहत donor will be eligible to claim ATG benefit in their income tax returns. So form 10BD BE, this was introduced like around 3-4 years back. For फॉर्म 10BD में हमको नेम एड्रेस और पैन देना होता है ऑफ द डोनर्स. ओके, इफ पैन इज नॉट अवेलेबल देन either आधार और ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट इलेक्शन आईडी राशन आईडी is also okay to be reported in form 10BD. Okay, there is one more clause called as tax identification number of the country of donor. तो टिपिकली जब भी फॉरेन डोनर्स डोनेट करते हैं और उन्होंने भी अगर ये फॉर्म 10 भी ही मांगा तो उनका हमको टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर लेके उसको रिपोर्ट करना होता है फॉर्म 10BD में. ओके, इफ दे डोंट हैव पैन, इंडियन पैन. सो दिस इज ऑल्सो वन इम्पोर्टेंट. टिपिकली एफसीआई जो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस रहते हैं फॉरेन सोर्स से आते हैं, फॉरेन डोनर्स का हम टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर भी रिपोर्ट कर सकते हैं. ओके, सो वंस यू फाइल फॉर्म 10BD, you will be after 3 or 4 days, typically you get to download form 10Bs which is issued from the income tax portal, and then you subsequently have to issue before 31st May. That's the rule. Okay, what is the penalty for not filing non-filing of 10BD within due date? Okay, so failure to do this activity can lead to monetary penalties of rupees 200 rupees per day. Okay, from 31st May, हर एक दिन का आपको 200 रुपीज पेनल्टी लग सकती है, और प्लस आपको पेनल्टी भी लग सकती है इन द रेंज ऑफ 10,000 to 1 lakh rupees, as that may be determined by the assessing officer. Any questions with respect to this 10BD BE? किसी ने कोई इश्यूज एक्सपीरियंस किए हैं व्हेन यू फाइल फॉर्म 10BD? कोई क्वेश्चन है इसके अराउंड? ओके. ओके, इसमें बस एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मेरे को बस शेयर करना था कि आप 31st May के बाद कोई लाइन आइटम अमेंड कर सकते हो लेकिन नए लाइन आइटम ऐड नहीं कर सकते हो विदाउट पेइंग पेनल्टी. सो सपोज इन फॉर्म 10BD इफ यू आर रिपोर्टिंग से 100 डोनर्स, ओके, और से 99th डोनर का अपने कुछ नाम गलत लिख दिया हो या पैन नंबर गलत डाल दिया हो, दैट यू कैन स्टिल गो एंड अमेंड सब्सिक्वेंटली. लेकिन अगर आपको 101st डोनर ऐड करना है, then it is counted as non-reporting of that donation of that donor information before 31st May, and then it will lead to this penalty. It's like you have failed to inform the income tax about that particular donation, और आपको फिर पर डे के हिसाब से 200 रुपीज पर डे के हिसाब से पेनल्टी भरनी होती है. ओके, दिस इज जस्ट वन. No, I thought I'll just share because a lot of times these are the questions that come up when it comes to filing of form 10BD. Okay. Yes. So if there are no questions, we'll move on to the validity aspect of uh, 10, 12A and ATG. तो जब भी एक नॉन प्रॉफिट स्टार्ट होती है, फॉर्म होती है, at the beginning the non-profit has to apply for provisional registration for 12A and ATG, which is valid for 3 years period. Okay.
after provisional registration is applied for, then you have to apply for regular registration within at least 6 months prior to the expiry of that provisional registration or within 6 months of commencement of activities. तो अगर नॉन प्रॉफिट स्टार्ट होता है, उन्होंने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ले लिया हो और एक्टिविटीज भी कमेंस किए हैं, तो विद इन 6 मंथ्स ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटीज रजिस्ट्रेशन रेगुलर रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है. और अगर एक्टिविटी स्टार्ट ही नहीं हुए नॉन प्रॉफिट के, देन बिफोर एंड ऑफ 6 मंथ्स of the expiry of that 3 years provisional registration, the non-profit has to apply for regular registration. That's the rule with respect to registration. Okay. Once you get 12 and ATG, 5 years तक valid रहता है. And yeah, and renewal application also has to be filed within before 6 months from the expiry date. तो अभी जैसे जिनके भी रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग में हुए थे 2021 में, 2021-22 में, सबका अभी 5 years कंप्लीट हो रहा है. तो ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस हु वर एलिजिबल वुड हैव ऑलरेडी फाइल्ड बिफोर 30th September, विच वाज 6 months बिफोर द एंड डेट, विच इज 31st March. तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस को ऑलरेडी मिला है 12 ATG, काफी लोगों का नहीं मिला है. सो वी शुड एक्सपेक्ट some form of either acceptance or rejection before 31st March from the income tax authorities. यहाँ पे कोई है ऑर्गेनाइजेशन जिनका अब तक नहीं आया है 12 ATG रिन्यू करके? ओके, किरण's ऑर्गेनाइजेशन. एनीबडी एल्स? बाकी सबका आ गया है 12 ATG रिन्यू करके? ओके, करण. My case 12A has come, but ATG has not yet come. ओ इज इट? ओके. नहीं, हाँ, या तो ये तो हमारा नहीं आया है अभी तक। अच्छा, राइट Even राइट, we've not gone to it. करेक्ट. Ayushi. या सो वी शुड बाकी सबको एक्सपेक्ट, मिला है। राइट. Yeah, so we should expect some kind of response from the income tax authorities in the coming days, क्योंकि ड्यू डेट 31st March है. उनके पहले, उसके पहले इनकम टैक्स को एक्ट करके, नो, some order has to be passed. It is mandatory for them. Dohit, I have a question. It's a Yeah, general question. Some organization are getting this for 10 years also. I mean, whose turnover correct. is less than 5 crore, I 5 crore. heard. Is Correct, it correct. true? Oh, both these Yeah. certificates, like 12 and ATG, both? नहीं, 80G is for 5 years only. 12A you can get for 10 years, provided आपका टोटल इनकम लास्ट 2 साल के कंटिन्यूस पीरियड के लिए 5 crore से नीचे हो, तो Okay, आपको so 10 साल तक मिल सकता है. इसके लिए there is a different request, or they just analyze our balance sheet and give us automatically? नहीं, सो एट द टाइम ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन इन फॉर्म 10AB, जब भी हमने अप्लाई किया रहेगा सितंबर में, उसमें एक ऑप्शन था, रहता है, जिसमें वी हैव टू बेसिकली टिक Put मार्क. this. Okay, या get it. ठीक है, thank you. रोहित, यस. देर इज दिस ऑर्गेनाइजेशन जो बैंगलोर में है, सो उनको एटीजी भी 10 साल के लिए मिल गया था। इज इट? ओके. अभी Yeah, किसी ने ग्रुप में मेंशन किया था। we've heard cases, but I'll just come in. So for those हाँ, who haven't got it for 10 years and should be getting it for 10 years, there is a process where you can actually apply for rectification. You should speak to your chartered accountant or whoever is helping you do this. What is the process and what they can do? And the other is, while they have given it for 10 years, uh, it's not actually valid for 10 years because the law only allows it for 5 years. So whenever they realize whatever happens, things will change. हम्म. या अगर बाय एरर हुआ रहेगा तो वो रेक्टिफाई भी हो ही जाएगा इन ड्यू कोर्स. ओके. यस. So, yeah, this is with respect to 12 and 80G. Okay, now let's talk about other compliances and the income tax, again, which are very critical for a non-profit, okay, with their due dates. So, Form 10B, which is the tax audit report, which every 12A registered non-profit has to file annually before 30th September. Then there is ITR 7 before 31st October. Form 9A and 10, practically it is to be filed by 30th September. Okay, and then there is Form 10BD, जो हमने अभी बात की, for reporting the donations by 31st May. Okay, these are the due dates.
Yeah, Anurag, your question, are new forms, so which forms are you talking about? I'm talking as per the new Income Tax Act 2025. नहीं, so ये साल के लिए लाइक असेस फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए ओल्ड एक्ट ही है, so it will be the same नो old act that will be applicable, hence the same forms. Of course कुछ changes हो सकते हैं forms में, but for the new act which will be effective next financial year, FY 26-27, that Ah, we'll have so is to. that applicable to 25-26? Because it is applicable from 1st of April, and the old act is supposed to be repealed, and they have Yeah, so already as announced far the as new forms. Yeah, so as far as I understand, it won't be applicable for this financial year, FY 25-26. So assessment year 26-27 के लिए नहीं applicable रहेगा. In to answer you, it will be applicable from assessment year 27-28 typically. But yeah, Ravi, Nee, what is the confusion, Anurag? Why are you confused? What is the issue? Because the new income tax is coming into from 1st of April, and generally in all cases we have seen that it is applicable to the financial year which has just ended, and they have already also mentioned the new forms 101, 102, 103 onwards applicable to charities. Yeah, of course, that's still in the draft form. That forms have not yet been approved. That is one. Second is that when a finance act is done, yes, some of the changes may apply for the previous financial year, but the act itself is coming from 1st April 26. So anything that has happened in this year, 26-27, will be as per the old act. Uh, if you have confusion, like we can take it offline to understand where it is coming from, but this is very clear and settled that uh, it can't apply retrospectively for the past year when the act itself is coming in from 1st April 2026. Okay. yes. So since we discussed about Form 10B and ITR, can you tell me, like, who is considered as substantial contributor for a non-profit? ये term सुना है substantial contributor? So there are, like, I've given like four options. Like, is it a donor who has contributed 50,000 aggregate since inception, or a donor who has contributed rupees 1 lakh in current financial year, or 10 lakhs cumulatively up to the current financial year, or is it both one and two, or none? Can you just type it in the chat box? Who is considered as substantial contributor under the Income Tax Act? Option 1, 2, 3, or 4. Okay, Anurag has mentioned option 1. Okay, Ayushi also goes for option 1. Others, what do you think? Have you heard, even those who have heard about this term? Can you just, okay, there's option number 3, both. Both, okay. Anybody else? Okay. Okay, so the right answer here is somebody who has contributed rupees 1 lakh in the current financial year, or rupees 10 lakhs cumulatively up to the current financial year. Okay, so there was an amendment that happened like couple of years back, with effect from basically 1st April 2025 onwards, that is assessment year 25-26 onwards. ये सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर का डेफिनेशन चेंज हो गया है अभी. Earlier it was 50,000 rupees in aggregate since beginning, but now a person is deemed to be a substantial contributor if either of the following conditions are met: the donations exceed 1 lakh in a single financial year, or their aggregate contributions up to the end of that year exceed 10 lakh rupees. Okay. Before this amendment, even relatives of such substantial contributors were also considered as substantial contributors, but now that has gone out. Now it is relatives, उनके relatives को नहीं माना जाता है substantial contributor. But these substantial contributors are important from a point of view where we will have to report as a non-profit any amounts that you receive from such kind of donors, and any transactions that may happen
between this such kind of donor, substantial contributor, and the non-profit, you will have to report it separately in your ITR and also tax फाइल report. अलग से एक टेबल रहता है जहाँ पे ये इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करनी मैंडेटरी है. ओके. So, so the question here for all of us to reflect is that are you maintaining such kind of records of the donors? Okay. If you're not maintaining, then it is important that this information is also maintained by the organization and also reported correctly in your income tax forms. Okay. I think nobody answered option number two. That means maybe this concept is little alien and new. Uh, but yeah, for all of us to be mindful of is that ये data capture करना mandatory है हमारे books में. In fact, it is also one of the we will talk about Rule 17A, the books of accounts that are required to be maintained by a non-profit. उसमें भी this is also this is also part of your books of accounts basically, this information. Okay, any questions? किसी को कोई questions doubts है इसके? Okay, so we will move on to the other concept which is called as inter-charity donations. Anybody is aware of this concept, inter-charity donations for non-profits from income tax angle, and what are the key things that we all need to be aware of? Can you just unmute and share whatever you guys know? If we give inter-charity donations, in that case, only 85% of it will be allowed as an application. Right, right. Correct. And in case of FCRA, we cannot give Correct, inter-charity absolutely. donations. Yeah. So inter-charity donations are donations made by a 12A registered entity to another 12A registered entity. Okay, this is allowed under income tax, but like Anurag said, under FCRA law, it is not allowed. Subgranting is not allowed. But under income tax side, it is allowed. Okay. अगर ऐसे कोई इंटर डोनेशंस देता है एक एनजीओ दूसरे एनजीओ को, तो दैट डोनर एनजीओ कैन क्लेम ओनली 85% ऑफ दैट अमाउंट पेड as towards application of income. Okay. And this inter-charity donation is mandatory to be reported separately in your ITR. Hence, again, it becomes important कि such kind of inter-charity donations are tracked separately by a non-profit. Okay, only then you will be able to report it in your ITR separately. Okay, any questions? रोहित, Yes, Ankush. अगर एक ऑर्गेनाइजेशन उसके पास एफसीआरए है और वो किसी नॉन एफसीआरए ऑर्गेनाइजेशन को क्या ऐसा कुछ डोनेशन दे सकता है? नहीं, नहीं, नहीं. तो ऐसे कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन को मैं जानता हूँ, तो मतलब फिर वो कैसे कर रहे हैं ऐसे? नहीं, अभी वो क्या कर रहे हैं वो तो मुझे नहीं पता ऐसे, बट सब ग्रांटिंग इज नॉट अलाउड अंडर एफसीआरए लॉ. अगर आपको नॉन एफसीआरए फंड्स मिल रहे हैं, दैट इज अलाउड. नॉन एफसीआरए फंड्स ओनली कैन बी सब ग्रांटेड टू अदर एनजीओज. हम्म। Maybe they ठीक है। are FCRA NGO, but they are transferring the fund from their non-FC account. It can be possible. ऐसे मैंने कुछ केसेस सुने हैं जिसमें मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एफसीआरए नहीं है, तो नॉन एफसीआरए वाला को बाहर से फंडिंग मिल रही है पर उनके पास एफसीआरए नहीं है, तो वो किसी और रूट के थ्रू चैनल कर रहे हैं। तो एज इन नहीं अभी. जिसके पास या एफसीआरए है, ऐसा मतलब ऐसे मैंने बहुत केसेस सुने हैं, तो मैं राइट, राइट. कंफर्म नो, कर रहा आई हूँ कि थिंक या I think we will talk about what the law says here. No, let's not talk about whatever transactions that are happening, which are not, no, which may or may बट not ये be legally नहीं है लीगल ना? permissible. Yeah, yeah. So legally speaking, it is not allowed for FCRA. ओके। Abhi, yeah, हम्म। yeah. So, one very quick thing I will add here is that if you feel it's sketchy, it is sketchy. Like you asking this question means you know it is sketchy, and yes, it is sketchy.
So of course people are doing it, people will find ways to do it, but that doesn't mean that it is okay or it is allowable in law. The difference is हाँ. just that they have not been caught till now, right? But if you yourself are telling me कि ये ऐसा कर रहे हैं, which means वो ऐसा हम्म. कर रहे हैं, तो do you think the department is dumb कि if they come and see it, they will not be able to see through it? They will be able to. I think Ankush speaks on that. They हाँ. will be नहीं able to रवि see. ऐसा. नहीं नहीं, या नहीं उन्होंने I'm मेरे. just highlighting हाँ. कि because what happens नहीं is उन्होंने मेरे को बोला then कि they ऐसा हो सकता है, तो मेरे को हैरानी यही correct, हुई that's थी what I'm saying, ऑर्गेनाइजेशन because की. then they go out हाँ. and say अरे हम तो ऐसा कर रहे हैं, तुम भी ऐसा कर लो. So all I'm हाँ. trying to caution is कि लोग कर रहे हैं, but that doesn't mean that it is allowed. या. वो कर रहे हैं बिकॉज उन्हें लगता है कि अभी तक पकड़ में नहीं आए तो सब कर हाँ. सकते हैं, बट जिस दिन एक भी जन पकड़ा जाएगा ना, उसकी एक लिंक हम्म. बैठेगी कि इस हम्म. ऑर्गेनाइजेशन ने किस किस को पैसा दिया है नॉन एफसीआर अकाउंट से, किस राइट. डोनर ने पैसा दिया था, क्यों आया. वो जितने भी है ना, जितने भी उनको एक साथ नोटिस आएगा. हम्म. इट्स जस्ट दैट दे हैव नॉट क्रैक्ड डाउन ऑन दिस येट, सो इन नहीं मुझे नो ये वे. लगा फिर वो ऐसी गलत चीज क्यों फैला रहे हो कि वो लोगों को बोल रहे हैं कि ऐसा ये चीजें तो ऐसे तो परमिसेबल है करना. मैंने कहा पता नहीं, मतलब मेरे को तो पता ही नहीं, क्योंकि अभी नहीं, मेरे उनको को बोलो, अब क्लैरिफाई हुआ ये. उनको बोलो कि तुम्हें किस लॉयर ने लिख के दिया है, किसी लॉयर का लिखा हुआ दिखाओ तब हम बात करेंगे. नहीं मैं उन, तो वही बात ही नहीं करता, मेरे को नहीं नहीं, जितना आई एम जब वही जस्ट जो आपने बोला ना सेइंग, शुरू आई में. एम जस्ट सेइंग यस लाइक या. your question should be curiosity. Oh, I'm glad it is allowed, please show me where or under, like how have you got it evaluated. Because कल अगर उठ के ये क्वेश्चन आया तो वो तुम्हें डिफेंड करने नहीं आएंगे. राइट. थैंक्स फॉर दिस क्लैरिफिकेशन. Yeah, thanks. No, thanks for asking, it's Yes. important. Yes, yes. Let's talk about cash restrictions now under income tax. Okay, there are certain disallowed cash transactions that we all need to be aware of. एक तो है कैश रिसीट अबाउ रुपीज 2 लाख रुपीज पर डे फ्रॉम अ सिंगल पर्सन और ट्रांजैक्शन, इट इज नॉट अलाउड टू बी रिसीव्ड बाय अ नॉन प्रॉफिट. ओके, कॉन्सिक्वेंस इसका, अगर आप लेते हो एक नॉन प्रॉफिट एक्सेप्ट कैश डोनेशन अबाउ रुपीज 2 लाख रुपीज, consequences could be that entire 100% could be, will be liable to be paid as penalty to the non-profit, to the authorities. Okay, so this is 2 lakh rupees का cap एक applicable रहता है. Second is that no cash payment above rupees 10,000 rupees in a single day to a single person is allowed. Okay, अगर आप पे करते हो तो 100% एप्लीकेशन डिसअलाउ हो सकता है. And if a non-profit receives more than 2,000 rupees in cash, then it cannot pass on the ATG benefit to such donor. ओके, यहाँ पे एक ट्रिकी पोजीशन या एक क्वेश्चन आता है कि कैन एन एनजीओ एक्सेप्ट रुपीज 2,000 मोर देन रुपीज 2,000 रुपीज इन कैश और नॉट. So for that the answer is yes, a non-profit can accept cash donation between 2,000 rupees to 2 lakh rupees. However, it cannot issue form 10BE to such donors who are giving more than rupees 2,000 in cash. Okay, this is one critical and confusing point, and a lot of questions we get around this point. So is this clear to everyone? Hmm. किसी का कोई क्वेश्चन है इसके ऊपर? Yes, yeah, I have a question on cash payment about 10,000, which you just said. So I heard that cash payment are allowed till 2,000 rupees to whole organization in a single day. Is it true or I because I was so confused when I heard this that in a single day I can make a 2,000 rupees Yeah, नहीं, as so it as a is cash reimbursement. Yeah. yeah, it's 10,000 rupees. The limit is 10,000. Earlier it was 20, then it was reduced to 10,000. 2,000 ऐसा कहीं पे है नहीं. Is it coming from income tax or some other place that you're referring to? I think there's some notice in MHA office where Okay. it was, I mean, coming through from some organization to me. I had attended a workshop on this, so there I was, Yeah. hearing this. But I was So, little surprised to know 2,000 a single day as a whole organization. So that was, I was yeah. asking. Since you mentioned MHA, I think you are referring to the FAQs released by MHA from Maybe. FCRA Right. perspective. Correct, Right. correct. Yes. तो उसमें ऐसे लिखा है कि वो डूज एंड डोंट्स में कि अप टू 2,000 रुपीज के ऊपर कैश ट्रांजैक्शंस आप नहीं करो फ्रॉम FCRA डोनेशंस. Okay, again, that is a best practice that they have advised.
Oh, okay. Okay, under the do's and don'ts that are released by MHA. True, true. Yes, do it. Do's and don'ts. Right now, Correct, I correct, can correct. relate. Yeah, Yes. that's separate. That's FCRA perspective. This is ठीक है. income tax. Yeah. Thanks. Yes. और किसी के कोई रोहित, क्वेश्चन है? या ये जो सेकंड में कॉन्सिक्वेंस में लिखा है 100% एप्लीकेशन इज डिसअलाउड एज इन। या सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ इनकम. एप्लीकेशन मतलब यूटिलाइजेशन. ओके, सो भले आप पे कर रहे हो 100, नो 10,000, जितना भी पे कर रहे हो उसका आपको जीरो एप्लीकेशन क्लेम करने मिलेगा व्हेन यू डू द कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एज पर द इनकम टैक्स एक्ट. ओके, तो ऐसा समझो इन सिंपल लेमैन्स टर्म कि आपने खर्चा तो कर लिया लेकिन उसका खर्चा क्लेम नहीं कर सकते हो आप. तो कैश हैज गॉन आउट बट यू विल नॉट बी एबल टू क्लेम इट एज योर एक्सपेंस फॉर इनकम टैक्स पर्पजेस. So now because you cannot claim it as your expense, it will remain your income unutilized for income tax ए, purposes. समझ गया, ठीक है। Yeah. तो मतलब वैसे मतलब कर सकते हैं, पर वो ओके, समझ गया, ठीक है। हाँ, हम्म। कैश पे का आपको क्लेम नहीं करने मिलेगा उसका खर्चा. हाँ, तो एज इन आपके सरप्लस पड़ा रहेगा, मतलब ये हाँ, बुक्स में करेक्ट शो होगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट. आपके इनकम टैक्स के लिए वो सरप्लस में खड़ा रहेगा. करेक्ट. तो इसका भी ब्रीफ हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे. कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, वी एज अकाउंटेंट्स व्हाट वी नीड टू रियली बी अवेयर ऑफ हाउ वो कंप्यूटेशन कैसे बनता है. यूजुअली हम ये आउटसोर्स करते हैं हमारे सीएस को, हमारे ऑडिटर्स को. But somewhere we all should be aware of what is the basic functionality of a non-profit's computation of income as per Income Tax Act. Okay, we'll discuss that in the subsequent slides. Till that, anybody else has any questions with respect to this slide? I have a question, Rohit. What Yeah, has happened is if at all an employee pays in cash about 10,000, but we as an organization reimburses yeah, via net banking or whatever online, will that work? yeah. No, so see, even that is not allowed. See, when an employee pays, the employee is paying on behalf of the employer only, right? Correct, एम्प्लॉय इज correct. नॉट पेइंग इन देयर ओन इंडिविजुअल कैपेसिटी. सो Mm-hmm. ऐसे पे करो या ऐसे पे करो, सी इनकम टैक्स में अगर ये अनर्थ होता है देन इट्स Got it, इट्स got it. नॉन कंप्लायंस फ्रॉम इनकम टैक्स एंगल. Okay, okay. या और किसी का कोई क्वेश्चन है इस पे? Yeah, sir, one question. हाँ. When we make a payment as a advance of rupees 15,000 to an employee for the travel and other project activity. And in that situation, if we pay rupees 10,000 and after that he will submit the bill for reimbursement. So we are not supporting documents for online payment and other because he paid in case. So in such case, is it applicable or not? हेलो. Hello, हाँ sir, जी. am I audible? हाँ. या सो आप बोल रहे हो कि आपने किसी एम्प्लॉय को पे किया एडवांस 15,000 रुपीज और फिर Yeah. वो एम्प्लॉय उसमें से थोड़ा थोड़ा करके यूज करेगा. इज माई Uh, अंडरस्टैंडिंग करेक्ट? yeah, he will go for travel and he pay rupees 12,000 in case, so little payment like food, full accommodation and other राइट expenses राइट in on the traveling actually. राइट. या नो, सो आई अंडरस्टैंड प्रैक्टिकल सिचुएशंस कैसे होते हैं, बट इसमें अगर देखो ब्रेकअप करके भी अगर 10,000 के नीचे रहेगा तो यू आर सेफ. देर इज नथिंग टू वरी अबाउट. बट इफ देर इज वन इनवॉइस विच इज इफ देर इज वन इनवॉइस फॉर 12,000 रुपीज एंड बाकी 3,000 रुपीज छोटा छोटा है, so that 12,000 rupees ideally should not be paid in cash in one go to a single person in a single transaction. That is what the rule says. Even if it is reimbursement, it is no the same rule applies. Okay, sir. तो ऐसे केसेस में वी ऑलवेज एडवाइज कि इधर द पेमेंट इज मेड थ्रू बैंकिंग चैनल और एल्स डायरेक्टली यू नो बाय द एनजीओ टू द वेंडर डायरेक्टली, अगर 10,000 के ऊपर जा रहा है नो ऐसे कोई खर्चे. Okay, sir. Thank you. यस यस. ओके. Okay, so we'll move on to the next topic, which is computation of income.
हम एक ब्रीफली बात करेंगे जो हमने अभी 12A के जो बेसिक कंडीशंस देखे थे, 85% यूटिलाइज करना मैंडेटरी है, 15% एक अलाउड अक्यूमुलेशन होता है फॉर एवरी नॉन प्रॉफिट, कि यहाँ पर वी कैन अक्यूमुलेट फॉर इन परपेचुटी दैट 15%, 85% इज टू बी मैंडेटरी अप्लाइड, और अगर हम शॉर्टफॉल है 85% का, देन वी कैन कैरी इट फॉरवर्ड टू subsequent years, right? So let's understand this with a scenario. Okay, so let's take scenario one. Suppose a non-profit receives 100 rupees as income, and say out of 100 rupees only 60 rupees खर्चा किया है. Okay, so actual application claimed is 60 rupees. Okay, so 100 minus 60, balance बचता है आपका 40 rupees. Okay, now by default a non-profit can accumulate 15% of its income every year. It can set aside. Okay, that's the principle, basic rule, that a non-profit is allowed to carry forward 15% without spending it. So we'll reduce this out of 40, 15 rupees, so bachega 25 rupees. Now this 25 rupees needs to be carried forward either for 1 year by filing form 9A, or up to 5 years by filing form 10. Okay, if you're carrying forward any money for 5 years, then specific reason is mandatory to be given, to be reported in form 10, ki, by intimating to the income tax authorities that you are carrying forward this amount for so and so purpose up to 5 years. Okay, so this is scenario one. Let's talk about scenario two, one more scenario two, and then we will take questions. So suppose नॉन प्रॉफिट को 100 रुपीज आते हैं और उसमें से 90 रुपीज इट एंड्स अप स्पेंडिंग. ओके, सो इन दिस केस द बैलेंस इज 10 rupees only that you have, which is unspent. This entire 10 rupees can be carried forward without really without filing any form. So it will be considered in that 15%, जो 15% every year applicable होता है set aside करने के लिए, this entire 10 rupees. So up to 15 rupees an NGO can accumulate without any worry. So in this example, this entire 10 rupees will be set aside and will be considered as part of that 15% accumulation, and hence there won't be any balance which needs to be carried forward for 1 year or 5 years. Okay, is this clear? How does the computation, or how does this calculation of 85%, 15% carry forward work in a non-profit? किसी कोई questions है इस पे? So Ankush, just to answer your earlier question कि payment होता है लेकिन application claim नहीं करने मिलता है. So if you see your 90 rupees, अगर ये 90 रुपीज जो स्पेंड हुए उसमें से समझो 10 रुपए, 10 rupees is not allowed, is disallowed as application, then you will be entering only 80 rupees here. So 20 rupees will be balance राइट which needs to be taken care of. Even though you would have spent 90 rupees, you can claim only 80 rupees as expense. तो आपका सरप्लस उधर उतने से बढ़ जाएगा. राइट. सो इसी इसी केस में जैसे अगर ये हमने 10 किया एक्यूमुलेट करके, जो 15% तक हम कर सकते हैं इनकम का, तो क्या ये भी ओवर ईयर्स भी ये भी तो एक अच्छी अमाउंट बन जाती होगी, राइट? Absolutely, absolutely. In तो fact, this is one उस of the ways in which reserves can be built, हाँ, provided ये unrestricted पैसा हो. हम्म, देखो, अगर आपको CSR ग्रांट मिलता है 100 रुपीज एग्जाम्पल, तो CSR में हम्म, तो इट इज मैंडेटरी दैट यू स्पेंड एंटायर 100 रुपीज, हम्म, राइट? तो वो अक्यूमुलेशन, तो उसमें से आपको 100 रुपीज पूरा स्पेंड ही करना है, तो कुछ बैलेंस ही बचेगा ही नहीं टू सेट असाइड. रिटेल ओनर्स. जो अगर ये अनरिस्ट्रिक्टेड पैसा है, हम्म. okay, from small donors or या. some donors who are flexible, उसमें से if you end up, you can set aside 15 rupees as a plan, as a strategy, and just spend 85%. That's it, 85 rupees. तो ये 15 every year accumulate करके it can form part of your reserves. राइट राइट. और उसमें हमें कुछ ऐसा स्पेशली कुछ आगे कुछ 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 फॉर्म फिल या कुछ और एडिशनली नहीं करना पड़ेगा उस हिसाब के लिए? नहीं, मतलब अलग से उसकी कुछ 15% और सेट चीजें है. नहीं है ना? नहीं, 15% जो बाय डिफॉल्ट रूल है ना, उसमें कुछ करना नहीं है. अर्लियर केस में जो सिनारियो वन में हमने देखा, अगर ये 15 के ऊपर जा रहा है, ओके, हम्म.
सिर्फ ये 25 इन दिस एग्जाम्पल, अगर 100 रुपीज आया, 60 रुपीज स्पेंड किए, 40 रुपीज बचा, 40 में से 15 आई कैन सेट असाइड स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ नहीं करना है मुझे, हम्म सिर्फ रिमेनिंग 25% आई हैव टू रिपोर्ट। हम्म। राइट। या ठीक है। या वन इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर अस टू रिमेंबर इज दैट ये जो अक्यूमुलेटेड पैसा रहता है, एंड जो कैरी फॉरवर्ड भी हम कर रहे हैं, 9 फॉर्म 9A एंड 10 फिल करके, दीज हैव टू बी kept invested in specified modes. Okay, commonly used modes are even money kept in savings account is allowed. Okay, so savings account, current account, fixed deposits, immovable property हो गया, certain mutual funds that are allowed under income tax act, debt instruments, UTI units, saving certificates. These are some common modes in which a non-profit can carry forward unutilized money over the years. Any questions? किसी का कोई questions है इसके ऊपर? Of course, this is not the complete and exhaustive list. Huh? There are other modes also specified. You can refer to this section and Rule 17C on income tax website. पूरा बड़ा बहुत बड़ा list है वो. You can go through that. सर, इनकम को लेके एक सवाल था कि हाँ. देर आर मैनी डोनर्स एंड फंडिंग पार्टनर्स की जो इनका इंटरेस्ट कैरी होता है, हमें अर्न करते हैं हम लोग ऑन द ग्रांट। हम्म. तो कुछ डोनर्स तो हमें अलाउ करते हैं कि आप उसी इंटरेस्ट को यूटिलाइज कर सकते हैं, हमारी यूसी में सबमिट करेंगे तो उतना यूटिलाइजेशन एटीजी में उनका फुलफिल होता है। Correct. बट कुछ डोनर्स हमें कहते हैं कि नहीं, हमें इंटरेस्ट से लेना देना नहीं है, हमने जितना इस साल आपको ग्रांट दिया है आप उसी का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट हमें दीजिए। Correct. सो मैनी टाइम्स वी हैव सम लिटिल बिट कंफ्यूज के अब उस इंटरेस्ट को सडन किस रूप में यूज करें, या उसका डाइविएशन डाइवर्जन जो है फंडिंग पार्टनर से लेवें, फिर उसकी एक अलग से एक्टिविटी प्रपोज करें। ऐसा Right. सर, इसमें कुछ क्लोज है या किस तरह से इसको नहीं. रेप्लिकेट किया जाता है? नहीं तो इसमें देखो, जिधर डोनर रिस्ट्रिक्शन आ रहा है, यू हैव टू फॉलो द डोनर्स रूल्स। हम्म कोई डोनर स्पेसिफिक रहते हैं कि जो भी इंटरेस्ट अर्न होगा वो आप हम्म वही प्रोजेक्ट के लिए यूज करें, तो आपको वैसा ही करना पड़ेगा, उसमें कुछ हम्म यही नहीं है। लेकिन जो डोनर्स फ्लेक्सिबल है, हु आर ओपन एंडेड, कि वॉट एवर इंटरेस्ट दैट यू अर्न, यू कैन यूज इट द वे यू वांट, or you may not use it also, right? So that हम्म that interest portion you are free to carry forward over the years. हम्म वो आपका वो साल का इनकम कहलाया जाएगा, बट यू कैन सी whether you can plug it under that 15% accumulation case में, it because that can be it can help you build reserves over the years, but this will come from donors direction only. जो डोनर्स यस। फ्लेक्सिबल है या कोई साइलेंट है, ओनली देयर यू कैन not utilize that money, otherwise you will have to use that money. Yeah, many times we felt that ki some donors demand for a return of the interest amount only at the end of the year. अच्छा. So उस हम्म. समय हम लोग काफी, क्योंकि 31st को ओवरऑल इंटरेस्ट तो कैरी होता नहीं, हमें अर्न नहीं हो पाता है, या तब हम्म. उस कंडीशन में अमाउंट रिटर्न करना फिर यूसी सबमिट करना, तो वहां पे फिर भी अमाउंट कुछ ना कुछ 31st के बाद भी हमें मिलता ही मिलता है एज ए हम्म. इंटरेस्ट के रूप में। हम्म. या अगर कोई डोनर्स फिर से पैसा मांग रहे हैं, तो इट इज मोर ऑफ अ नेगोशिएशन दैट प्रॉब्ली कैन बी डन, कि इंस्टेड ऑफ गिविंग बैक यू विल यूज इट फॉर द प्रोजेक्ट इटसेल्फ ना, आई मीन एनीवे ऐसा कोई इसका रूल नहीं है इसके ऊपर, इट इज मोर टू डू विद between the two parties what they agree on. So let's talk about TDS rules. Briefly talk about the law and no, the basic rules that जो हमको पता रहनी चाहिए, और जहाँ पे काफी questions आते हैं, we try to cover that part of this topic. So before we begin this topic, why do you think कि government prefer करता है to collect tax through TDS rather than waiting till the end of the year? क्योंकि जब आईटीआर फाइल करना है, तभी हम सारे सब लोग इनकम टैक्स तो भरते ही है, राइट? तो भरना ही होता है, मतलब एट द टाइम ऑफ फाइलिंग आईटीआर। why is this mechanism of having this TDS collected and paid during the year? Can somebody unmute and share your thoughts? Why do you think government wants to collect TDS? Hello, shall I tell Yes, you? Rashmi.
यस यस हाँ, रश्मि। मुझे लगता है कि जैसे हम लोगों के लिए खर्चे करने के लिए भी कुछ मनी चाहिए, वैसे भी गवर्नमेंट के लिए भी लगता है। सो पार्टी मतलब पार्ट बाय वोट करेक्ट करेंगे तो फिर उनको पैसा भी मिल सकता है, और हमको भी अच्छा लगता है। एक अमाउंट एकदम लमसम भरने के बजाय राइट। थोड़ा थोड़ा भरेंगे तो फिर इट इज इजी फॉर अस ऑल्सो। करेक्ट करेक्ट। एब्सोल्युटली यू आर राइट रश्मि। यस, सो जस्ट लाइक थैंक यू। एडवांस टैक्स भरना पड़ता है, वैसे ही टीडीएस को भी देखना चाहिए, so that the government has a continuous cash flow during the year, and the government doesn't have to wait till the end of the year for to receive cash. Yeah, also Dohit, वो मतलब as it is named TDS, so tax deduction it's also उनको सोर्स भी गवर्नमेंट को पता चलता है कि कहाँ से कौन सा इनकम। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो कंप्लायंस बर्डन सिर्फ एक तो नो, सो लाइक लाइक यू राइटली सेड, सोर्स भी समझता है क्योंकि पीरियोडिक रिपोर्टिंग होती है, एवरी क्वार्टर हम टीडीएस रिटर्न्स फाइल करते हैं जहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन जाता है गवर्नमेंट को। सो यू आर राइट, ऑल द इंफॉर्मेशन गेट्स रिपोर्टेड. Additionally, there is a continuous compliance. We don't have to, government doesn't have to wait till the end of the year for this compliance of taxation. Periodically during the year, compliance भी होते रहता है. Plus, the onus of compliance is also shared between the payer and the payee both. Okay, not just the payer of taxes, but even the payee of taxes, right? कि um, नो, क्योंकि जो पे करता है टू द पे, टू द जो सर्विस रिसीवर रहता है, सर्विस रिसीवर हैज टू बेसिकली कंप्लाई, उनको डिडक्ट करके सामने वाले के बिहाफ पे पेमेंट जमा करना है गवर्नमेंट के पास. सो ओनर्स ऑफ पेइंग टैक्स इज ऑल्सो शेयर्ड बिटवीन बोथ द पार्टीज. ओके. यस. तो जब भी हम टीडीएस बुकिंग वगैरह करते हैं, व्हाट वुड बी द जर्नल एंट्री? कैन एनीबॉडी जस्ट अनम्यूट एंड शेयर व्हाट विल यू डेबिट एंड व्हाट विल यू क्रेडिट व्हेन यू बुक टीडीएस? आपके एनजीओ को एक पेमेंट करना है और टीडीएस डिडक्ट करना है, तो व्हाट, हाउ विल यू बुक दिस ट्रांजैक्शन इन योर बुक्स? व्हाट विल बी द बेसिक जर्नल एंट्री? यस, कैन समबडी अनम्यूट? TDS to vendor. ओके. एनीवन एल्स? Expense to TDS payable to party to vendor. राइट राइट. यस. So you will debit expense, because debit the expense to creditor, and TDS payable you will credit. Okay. I think Ayushi, you mentioned debit the. So when you make the payment to the Hmm. government, you will debit TDS account. But when you Yeah, book the expense or book the TDS reduction entry, this will be the entry that correct, correct, correct. you will pass. यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि आप आपके बुक्स में भी, जब भी आप लेजर बनाते हो टीडीएस के, वो भी आप हर एक सेक्शन के अलग बनाकर ही बुक करें. जैसे 194 जे के लिए अलग लेजर बनना चाहिए, 194 सी के लिए अलग, 194 आई के लिए अलग. क्योंकि जब भी आप रिटर्न्स फाइल करते हो, आपके आईटीआर टैक्स फाइल रिपोर्ट, उसमें भी अलग से इंफॉर्मेशन देना मैंडेटरी होता है फॉर ईच ऑफ द सेक्शंस. प्लस जब भी आप रिटर्न्स फाइल करते हो, क्वार्टरली रिटर्न्स, उसमें भी you have to report section wise, so it becomes easier to reconcile periodically what you have booked in your books versus what you are reporting to the authorities. Okay, सपोज आपने एक ही लेजर ऐसे खोल दिया है, टीडीएस पेएबल अकाउंट, तो सारे सेक्शन एक ही इसमें रहेगा, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू रियली क्रॉस वेरीफाई सब्सिक्वेंटली. ओके. Yeah, let's look at some of the rates, TDS rates, and certain threshold limits. So, no, 194C, it is for TDS contractors. You have to deduct 1% when it comes to individuals and HUF, and 2% when it comes to others. Threshold limit is कि अगर single transaction हो तो 30,000 rupees या aggregate 1 lakh rupees. That's the rule. Similarly, for 194J, there are three subparts to it. One is TDS on fees for technical services, which is 2%. TDS on fee for professional services, which is 10%. Both are under 194J.
ओके, इसका थ्रेशोल्ड लिमिट है 50,000 रुपीज, के ऊपर रहेगा तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा. अर्लियर दिस लिमिट वॉज 30,000 रुपीज, बट नाउ इट इज 50,000 रुपीज. द थ्रेशोल्ड हैज इंक्रीज्ड. Okay, then there is, sorry, I mentioned three parts, but there are two parts to 194J. For 194I, which is TDS on rent, again there are two parts. TDS on rent for plant and machinery, it is at 2%. थ्रेशोल्ड लिमिट इज 50,000 रुपीज पर मंथ, के ऊपर रहेगा तो आपको डिडक्ट करना होगा टीडीएस. और अगर लैंड एंड बिल्डिंग रहेगा, जैसे रेंट, टीडीएस ऑन रेंट फॉर बिल्डिंग, तो इट इज एट 10%. अगेन द थ्रेशोल्ड लिमिट इज अबाउ रुपीज 50,000 रुपीज. Similarly, TDS for commission 194H, it is 2% if it is 20,000 rupees in aggregate for the entire financial year. Okay, so these are just commonly used TDS sections and the rates and threshold limits. Uh, if there are any confusion with respect to TDS deduction, applicable है नहीं applicable है, क्या rate है, क्या threshold limit है, we strongly advise that reach out to your auditor, or maybe if you have a finance consultant, if there is any confusion with respect to TDS applicability. Because once you make the payment to the vendor, it is difficult to get back in case of short deduction. ओके, आप एक बार पेमेंट करने के बाद, अगर 2% की जगह 10% की जगह आपने 2% काट दिया हो, एग्जाम्पल, it's very difficult to get back that remaining 8% from somebody who has received the money subsequently. Of course, in some cases you may be successful, but practical difficulty and challenges भी काफ़ी हो सकते हैं इसमें. And then also, आप उसका फिर एप्लीकेशन क्लेम नहीं कर सकते हो इफ यू आर डिडक्शन, इफ यू आर शॉर्ट डिडक्टेड. वी विल टॉक अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑल्सो, बट या, so yeah, it is advisable that you consult your auditor or your finance consultant when it comes to TDS. Okay, then there are other sections as well. मैंने एक लिंक दे दी है यहाँ पे इनकम टैक्स वेबसाइट की, जिसमें बहुत बड़ी लिस्ट है. अदर देन द कॉमनली यूज सेक्शंस दैट वी जस्ट डिस्कस्ड, अगर आपको कोई रेफर करना हो, यू कैन गो टू दिस लिंक एंड यू विल गेट all the rates of TDS from income tax website. ओके, सो सपोज, सो देयर इज वन मोर रूल, 206A है. अगर किसी वेंडर ने आपको पैन नंबर नहीं दिया हो उसका, तो, और इफ द पैन नंबर इज गिवन बट द पैन इज इनऑपरेटिव, ओके, in this case you are liable to deduct 20% of the no, of normally what you would do otherwise, 20% or the actual rate whichever is higher. That is what the rule says. ओके, सो अगर 2% है, 10% है, तो उसकी जगह आपको 20% डिडक्ट करना होगा इन सच केसेस. ओके, एनी क्वेश्चन सो फार? ओके, तो इसके अलावा एक और काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, और ये भी, इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, विच इज सेक्शन 195. ओके, टीडीएस ऑन पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट्स. तो जब भी हम आउटसाइड ऑफ इंडिया पेमेंट करते हैं टू अ नॉन रेसिडेंट, even such transactions are liable for TDS. Of course, there are certain rules that we all need to be aware of first. Okay, so we'll talk about this section first of all from awareness perspective, so that whenever that situation comes in your organization, you take the right steps to address such kind of, or to handle such kind of transaction. Okay, so applicability says that any person who makes any payment other than salary or interest that is taxable in India to a non-resident must deduct TDS. ओके, इसमें कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं होती है. अगर आप नॉन रेसिडेंट को पे करते हैं आउटसाइड इंडिया, इसमें कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है. छोटा से छोटा ट्रांजैक्शन भी लायबल होता है टीडीएस के लिए, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस. ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हियर इज दैट द पेयर मस्ट डिडक्ट टैक्स ओनली व्हेन द पेमेंट इज मेड टू non-resident Indian, or probably a non-resident, not Indian, sorry, to a non-resident for the services which are taxable in India. ओके, जैसे अगर एनजीओ ने कोई सर्विसेज ली हो किसी एडवाइजर की, लोकेटेड इन इन इधर इन यूएस और यूके, तो जब भी आप पेमेंट करते हो उनको फॉर सच काइंड ऑफ सर्विसेज, इवन इफ दे आर इन एडवाइजरी टर्म्स, such transactions are liable to tax in India, and hence you have to deduct TDS. ओके, इसके रेट डिटरमाइन
करने के लिए you will have to reach out to your CA because you there is there is double taxation avoidance agreement DTA है ए बोलते हैं which is signed between two countries जिसके अंडर such kind of transactions are covered wherein rates and threshold limits and everything is given in detail. Okay, तो ये DTA रेफर करके डिटरमाइन करना होता है कि ये ट्रांजैक्शन पे कितना परसेंट कितना रेट पे हमको TDS डिडक्ट करना करना है. ओके, आफ्टर डिटरमाइनिंग दिस rate, there are certain forms that needs to be filed before you make the payment through banking channels, which is called as 15CA and 15CB. Okay, it is certified by a chartered accountant. Agar even the banks will not allow you to remit money outside of India in absence of form 15 CACB typically. Even if the bank is allowing, it is important that you as an organization complies with this rule. Okay, if you want to refer to these rates for for each of the countries तो उसका भी लिंक यहाँ पे दिया गया है इनकम टैक्स वेबसाइट पे. ये लिंक है और बहुत सारे कंट्रीज के साथ इंडिया ने जो साइन किया है अग्रीमेंट उसके तहत आपको रेट्स देखने मिलेंगे. इट इज अगेन द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू कवर इज दैट फर्स्ट वी नीड टू बी अवेयर दैट such payments to non-residents are subject to TDS. Hence, you will have to reach out to the right people, whenever such transactions occur in your organization. Okay, is this clear? Is this making sense? कोई क्वेश्चन है किसी के? Okay, sure. So let's talk about the due dates for TDS compliances. TDS on salary, rent, consultancy fee, contractors, ये हमको डिपॉजिट करने होते हैं 7th of the subsequent month in which the TDS becomes liable. For the month of March, ये डेट है 30th September. Similarly, for quarterly returns, the due dates are 31st July, October, Jan, and May for the preceding quarter. Okay, these are the due dates for TDS. Now let's talk about repercussions जब भी हम TDS नहीं डिडक्ट करते या डिडक्ट करके गवर्नमेंट को पे नहीं करते. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लुक एट द इंटरेस्ट. ओके, इन केस ऑफ डिलेड पेमेंट अगर आपने TDS डिडक्ट किया है लेकिन पे नहीं किया है गवर्नमेंट को देन द इंटरेस्ट गेट्स चार्ज एट 1.5% for every month or part thereof. So that means agar suppose in the month of March you have deducted TDS but you fail to pay to the government before the due date. Okay, for March month the due date is 30th April. तो अगर आप मई में अगर पे करते हो सो इन दैट केस आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा फॉर द एंटायर मंथ ऑफ मार्च plus April plus May. If you pay on in the month of May, even if you pay on 1st May, 5th May, 30th और 30th May, आपको पूरे महीने का उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ता है. ऐसे नहीं कि वो डे टू डे कैलकुलेट होता है ये इंटरेस्ट. ओके, suppose you are deducting TDS but if suppose you fail to deduct TDS then the interest is at 1% for every month. सेम रूल अप्लाइज कि अगर मंथ पूरा मंथ कैलकुलेट करना होता है इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए एंड नॉट जस्ट द नंबर ऑफ डेज. ओके, दैट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ऑल ऑफ अस टू रिमेंबर. इसमें पेनल्टी है कि लेट फी ऑफ ₹200 पर डे अक्रू होती है फॉर फेलियर टू फाइल TDS रिटर्न्स. ओके, subject to the total amount of tax that is actually liable. ओके, अगर लेट फी, हाँ ये लेट लेट फाइलिंग के लिए ₹200 है. अगर नॉन फाइल करते हो, फाइल ही नहीं करते हो या इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन देते हो आप TDS रिटर्न में तो पेनल्टी में ऑल्सो भी इम्पोज बाय द असेसिंग ऑफिसर विच कुड बी इन द रेंज ऑफ ₹10,000 to ₹1,00,000. नाउ इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर नॉन प्रॉफिट्स टू बी अवेयर ऑफ कि अगर कोई एक्सपेंस पे आपने TDS डिडक्ट नहीं किया हो तो एट द टाइम ऑफ क्लेमिंग एप्लीकेशन आपको 30% डिसअलाउ होगा फॉर दैट एक्सपेंस. ओके, so suppose the expense is say whatever the amount of expenses uska 30% it will be disallowed when you calculate application of income for that particular year.
जो हमने अभी सिनारियो 1 और 2 में देखा, व्हेन यू क्लेम दैट एप्लीकेशन ऑफ इनकम, आपको वो एक्सपेंस का 30% डिसअलाउ होगा, ओनली 70% यू विल बी एबल टू क्लेम इट एज एप्लीकेशन। सो नेचुरली व्हेन इट इज डिसअलाउड, उतना पोर्शन आपके सरप्लस में ऐड हो जाएगा। ओके, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ऑल ऑफ अस टू बी अवेयर ऑफ। ओके, कोई क्वेश्चंस है इसके ऊपर? कूल। Okay, so a reflective question. So imagine you are managing the accounts of your non-profit and you receive 25,000 in cash from someone who does not provide the identity details. So how would you record this transaction in your books? As a regular donation or will it be treated differently? Can somebody unmute and share how will you treat this 25,000 rupees received in cash? और पता नहीं किसने दिए है। treated differently, मतलब ओके, जैसे आपने बोला कि 2000 अबाउट अगर कोई कैश देता है तो 2000 तक ही एटीजी देना है, करेक्ट, और रिसीव कर सकते हैं पर वो एटीजी के लिए वो एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। राइट राइट। It will be treated as anonymous donation. Perfect, perfect. Yeah. It will be treated as anonymous donation and you have to separately record it. Okay, so let's talk about anonymous donation. कोई बता सकता है what is anonymous donation? Like, how is it defined in the Income Tax Act? If we do not know the identity of the person and details of the donation. Okay, and are you aware like what is identity of a person? Name, address, PAN also, I believe. and PAN. Yeah, PAN is not, name and address is the main thing. correct, correct. Absolutely, absolutely. Yeah. So anonymous donation is nothing but a voluntary contribution, and NGO does not have the identity of donor, and identity under the Income Tax Act has been defined as name and address only. It is name and address. ओके, तो दोनों होने चाहिए। सिर्फ नाम है एड्रेस नहीं है, देन ऑल्सो इट इज एनोनिमस। नाम नहीं है एड्रेस है, देन ऑल्सो इट इज एनोनिमस। नेम एंड एड्रेस बोथ शुड बी देयर। ओके, ओनली देन इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एनोनिमस। पैन इज नॉट मैंडेटरी फ्रॉम एनोनिमस डोनेशन पर्सपेक्टिव। ओके, पैन नहीं है तो दैट डजंट मीन दैट डोनेशन इज एनोनिमस एज लॉन्ग एज यू आर हैविंग नेम एंड एड्रेस। दिस इज द इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन फॉर ऑल ऑफ अस टू बी अवेयर ऑफ। Okay, exemption limit है higher of so certain portion of donation anonymous donations are exempted, which is 1 lakh rupees or 5% of the total donations received by a non-profit in that particular year, whichever is higher. उतने लिमिट तक एनोनिमस डोनेशन के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन बियॉन्ड दिस लिमिट्स, अ नॉन प्रॉफिट हैज टू पे अ फ्लैट टैक्स ऑफ 30% if if the total anonymous donation crosses this limit. This is the rule with respect to anonymous donation. ओके, ऑफ कोर्स इसमें एक एग्जेम्पशन दिया गया है फॉर रिलीजियस ट्रस्ट, जैसे टेम्पल्स, मॉस्क, चर्चेस एंड सो एंड सो फोर्थ हैंडल, जहाँ पे एनोनिमस डोनेशन के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि लॉट ऑफ मनी गेट्स कलेक्टेड ऑन इन द डोनेशन बॉक्स, राइट? तो इनके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा। बट अदरवाइज फॉर ऑर्गेनाइजेशंस लाइक अस which are not religious, these are the exemption limits. Okay, now can somebody help me with accounting entry? क्या रहेगा इसकी accounting entry when you receive an anonymous donation? What will you debit and what will you credit? Come on, this should be a straightforward entry. Suppose you receive cash of 25,000 rupees. How will you record it in your books? Cash or bank to anonymous donations. Right, that's right. You will debit cash or bank. Okay, debit the receiver, and it is important that you record this anonymous separately in your income side. Okay, and not club it together। एक ही लेजर में सारे इनकम नहीं डालने चाहिए। एनोनिमस अलग होना चाहिए, सीएसआर अलग होना चाहिए, इंडिविजुअल डोनर्स अलग होना चाहिए, कॉर्पस अलग होना चाहिए। ऑफ कोर्स कॉर्पस विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर, बट
इंटरेस्ट अलग होना चाहिए ऑन द इनकम साइड, सो दैट when you when you file your ITR, tax audit report and financial statement, when you prepare, you have that data ready in your tally itself or the accounting software itself. Okay, so separate ledgers are strongly advisable. Or anonymous donation, it is mandatory to be reported separately in ITR and tax audit report. Okay, so there's a related question here. Now we, जैसे हमने अभी anonymous donation के बारे में डिस्कस किया, so what do you think, what should be the controls that a non-profit should really set up internally to capture donor details, be it on your website or while accepting cash donations, or कभी हम हमारा बैंक अकाउंट डिटेल ऐसे ही शेयर कर देते हैं किसी के साथ, राइट, या हमारे वेबसाइट पे भी कभी होता है. सो what are the controls that a non-profit should ideally have so that anonymous donations are not received without our knowledge and we don't end up crossing that limit? Anything that you can think of that will help prevent receiving anonymous donations without our knowledge, and when where that is possible that we can reduce it below the threshold limit. किसी ऑर्गेनाइजेशन ने इस चीज को कंट्रोल में रखने के लिए कुछ इम्प्लीमेंट किया है, कोई स्ट्रैटेजीज या कोई कंट्रोल्स? कोई शेयर करना चाहेगा आप? कैन यू जस्ट अनम्यूट एंड शेयर? I think if there is a platform, Dana Mojo, if you people pay through that, they ask for their details and then they transfer to an NGO. करेक्ट. Second, we should not have our bank details on our website so that we receive that random donations. करेक्ट. करेक्ट. या एब्सोल्युटली राइटली सेड. हमारे वेबसाइट से भी अगर हम कोई पेमेंट लेते हैं, इट इज स्ट्रांगली एडवाइजेबल दैट वी कलेक्ट डोनर इन्फॉर्मेशन बिफोर वी रिसीव द पेमेंट. Okay, basic like name, address, and because we are talking about website, then also there could be a situation where a foreign donor also logs into your website and tries to make the payment, right? So ideally we should not even accept donations from foreign citizens. So there has to be some kind of control mechanism on your website itself, which takes some kind of declaration from the donor whether they are foreign citizen or Indian citizen. Only Indian citizens should be allowed to be to give donations in your Indian bank account. If it is foreign donor, then ideally that should go in our FCRA bank account and not in our non-FCRA bank account. So these are some controls that you can place. Okay, when we talk about websites. Otherwise, वेबसाइट के बाहर अगर आप ले रहे हो, लाइक यू राइटली सेड किरण, हमारा बैंक अकाउंट डिटेल्स शुड नॉट आइडियली बी देयर ऑन द वेबसाइट, क्योंकि कोई भी जस्ट बैंक अकाउंट डिटेल्स लेके ट्रांसफर कर सकता है एंड यू विल नॉट इवन नो हु हैज स्पेंट, हु हैज गिवन अस दैट मनी. Okay, so this not only this is not only relevant from anonymous donation perspective, but also there are other laws, right? Like there are like Money Laundering Act, there is FEMA Act, FCRA Act. ये सारे चीजों के लिए it is important that source is known. ये एनोनिमस डोनेशन प्रोविजन इसके लिए कि कभी कुछ एक छोटे लेवल पे अगर कोई आता है, देन दैट दैट कैन बी कंसिडर्ड एज एनोनिमस एंड स्टिल एक एक लीवे दिया है एनजीओस को, बट दैट शुड नॉट बी अलाउड टू बी मिसयूज समवेयर, और इवन अननोइंगली इट शुड नॉट कम टू आवर इट शुड नॉट मेक एन इशू फॉर अस in running the organization. So all these controls are very critical. अगर आपको कोई डोनेशन किसी डोनर से लेना हो, तो इट इज बेस्ट एडवाइजेबल दैट यू टेक सम काइंड ऑफ declaration from the donor saying where they give officially their name, address, PAN, be it on email also is okay. Some kind of form if they fill, that is also perfectly fine. That will just help us put in those controls in place before receiving that money. Yeah, so Ramakrishna, we don't have to report anonymous donation because Form 10BD उसी के लिए फाइल होता है जब भी we have to pass on the ATC benefits. And in order to pass on the ATC benefits, you will need information of the donor. So if you don't have any information of the donor, you cannot fill that amount in Form 10BD. किसी के और कोई क्वेश्चंस है इसके ऊपर? Okay. We'll move on to this next topic, which is again a very small topic, Rule 17A, Books of Accounts.
ये कुछ साल पहले ये रूल आया था जिसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है अभी कि व्हाट ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मैंडेटरी फॉर अ नॉन प्रॉफिट टू बी for a non-profit to follow, basically to keep it. And also now we have to report the books of accounts maintained in our ITR and form 10B as well. Okay, in the tax audit report. So we'll look at some critical records, some important. It's again a long list. I have just provided the list also, the link also here of the IT website जहाँ पे ये रूल में जो भी critical books of accounts या जो mention किया है, you can go and refer to this on the website. Some important records are of records of projects or institutions run by a non-profit, record of income, application of income, एप्लीकेशन इफ कोई अगर खर्च आप पैसा स्पेंड कर रहे हो फ्रॉम प्रीवियसली accumulated इनकम इवन दैट हैज टू बी tracked, monitored, and also recorded in your books of account. Even that forms part of your books of accounts. कॉर्पस डोनेशन अगर जो आपको रिसीव होता है या अगर आप स्पेंड भी करते हो कोई पैसा आपके कॉर्पस से, इवन दैट इज मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू बी ट्रैक्ड एंड ऑल्सो फॉर्म्स पार्ट ऑफ योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ओके, कोई अगर लोन बोरोइंग्स लिया हो, प्रॉपर्टीज हेल्ड बाय द ट्रस्ट, इमूवेबल प्रॉपर्टीज के डिटेल्स इंपॉर्टेंट है रखने के लिए. ओके, देन स्पेसिफाइड पर्सन, वी स्पोक अबाउट सब्सटेंशियल कॉन्ट्रीब्यूटर, राइट? Details of substantial contributor also forms part of books of accounts. Okay, so these are now specifically uh, provided under the law कि आपको ये mandatorily maintain करने हैं. So organizations who are not following or probably are not aware of this kind of rule, I would again strongly advise to look at this rule very carefully and ensure कि आप ये books of accounts maintain कर रहे हो. अब तक नहीं किए हो तो at least you can start implementing now so that going forward you are compliant. Okay. अगेन दिस रूल ऑल्सो प्रोवाइड्स कि आपको 10 साल तक आपके ये सारे रिकॉर्ड्स और बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने मैंडेटरी है अभी. Okay, 10 years from the end of the relevant assessment year. That is what the law says. It can be either in written form or electronic form or any digital form, but it should be at your registered office. Okay, अगर आपका registered office के अलावा कहीं पे ये books of accounts maintain हो रहे हैं, then ideally this separate office address should also be intimated to the assessing officer in writing कि you are not maintaining your books of accounts at registered office but at this particular place. Okay, that's also very important. यहाँ पे एक प्रैक्टिकल सिनारियो ऐसे होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स रजिस्टर्ड एड्रेस इज इन द नेम ऑफ वन ऑफ द ट्रस्टीज. ओके, इज दैट ऑफ आवर रजिस्टर्ड ऑफ ट्रस्टीज, लेकिन एनजीओ इज रनिंग फ्रॉम अ रेंटेड प्रीमाइसेस. So here books of accounts are maintained at the rented premises and not at the residential address of the trustee. So in this case, income tax needs to be intimated कि you are maintaining your books of accounts not at the registered office but at a separate place. Okay, even that is mandatory under this rule. कोई क्वेश्चन है इसके ऊपर किसी के? Okay, okay. So let's talk about this employee investment declaration. Again, a last topic for today. Again, a small topic, but critical, especially when somebody is following old tax regime. Okay. So how does this work? So before this old tax regime, it was, sorry, before this new tax regime, it was only old tax regime जहाँ पे employees जिनके सैलरी पे टीडीएस काटना मैंडेटरी होता था if they cross that particular slabs that have been given under the Income Tax Act, NGO needed to collect all the investment declarations at the beginning of the year and then towards the end of the year उनके proofs लेके उनका income tax computation करके जो भी adjustment करना होता था, that an NGO had to do. But now with this new tax regime, it becomes all the more important to get this declaration at the beginning itself कि एक whether the employees want to opt for old regime or by default they would be otherwise they would by default they would be considered as new regime employees. Okay, so the steps here are
ओके, सो बिफोर द स्टेप्स, अगर आपको किसी का कंप्यूटेशन करना है कि वेदर बेस्ड ऑन द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय वेदर TDS will be applicable or not, you can refer to this calculator provided under the income tax वेबसाइट, जहाँ पे आप टोटल CTC या टोटल ग्रॉस सैलरी डाल के आपको पता चल जाएगा उन वेदर TDS इज tax has to be deducted or not. Whatever is the tax that comes, you will have to proportionately calculate for the next 12 months or up to 31st March, and then start deducting TDS month on month for that particular employee. Okay. सैंपल डिक्लेरेशन लेना जरूरी है आइडियली, अदर अगर डिक्लेरेशन एम्प्लॉय से अगर डिक्लेरेशन नहीं लेते तो बाय डिफॉल्ट अभी न्यू रेजिम में माना जाएगा। तो अगर किसी एम्प्लॉय के होम लोन हो एग्जांपल, या किसी के ATC ATG ATD डिडक्शन लेने हो, so it is mandatory that the NGO collects this declaration from the employees. Declaration I will be sharing. No, I have one format also which you can use if you want to implement this practice. If you already have, then you can just refer to this template and see, if there is anything missing that you would want to add it in your template as well. So I'll be sharing that template subsequently along with this PPT. So usually the steps to follow here is that first to obtain investment declaration at the beginning of the financial year to see what choice the employee is making, whether it is old regime or new regime that they want to go into. If it is old regime, then declaration should be for the planned investments of all the employees or of such employees. फिर हमको उसका कंप्यूट करना पड़ता है टैक्स लायबिलिटी, एंड देन टोटल अमाउंट वी हैव टू प्रोपोर्शनली डिडक्ट फ्रॉम मंथली सैलरी पेमेंट्स अप टू 31st March. Okay, when we are towards the end of the year, usually in the month of February or March, before we release the last salary, typically, we obtain all the investment proofs and recompute the TDS on salary for each of the employees. And then whatever is that shortfall or excess, we adjust it in the last month's salary. That's the usual process when it comes to TDS on salaries. Okay, किसी का कोई क्वेश्चन है इस प्रोसेस पे? आप यही चीज फॉलो कर रहे हो, या is there anybody who is following such kind of process in your organization? Can you just type it in the chat box as yes, whether you are following this process? Yeah, is it that nobody is following, thinking कि अभी सब लोग न्यू टैक्स regime में by default है, so you don't need to follow this? No, we follow it. Okay, okay. Anybody else? Is anybody following this process? Of course, this becomes applicable only when there are certain employees who are liable to be taxed. मतलब अगर वो थ्रेशोल्ड के नीचे है, जैसे अभी with rebate and all up to 12 lakh rupees, there is no tax really that comes right on salary. तो उसके अंदर है तो कुछ इशू नहीं है, बट if somebody is crossing that income limit, then you will have to do this process, follow this process for TDS calculation. Okay, is this clear? किसी का कोई क्वेश्चन है इसके ऊपर? Okay, perfect. So this yeah, this brings an end to this session. ये एक compliance tracker है which I wanted to just, so this is just a template where as a best practice organizations can adopt. I will also मैं एक शेयर कर दूंगा ये compliance tracker भी Excel format में. So it is very comprehensive and easy to use tracker basically to ट्रैक जो अपने मंथली कंप्लायंसेस होते हैं विद रिस्पेक्ट टू नॉट ओनली जस्ट TDS बट ऑल्सो लाइक प्रोफेशन टैक्स हो गया, PF ESIC, नो FCRA इनकम टैक्स, फॉर सेक्शन 8 कंपनीज देयर इज AOC MGT 7 एंड सो ऑन एंड सो फॉर MGT 14. तो you can modify this tracker and add whatever specific compliances that your organization has to follow. आप इसको कस्टमाइज करके आप एक फॉलो आप अडॉप्ट कर सकते हो, सो दैट देर इज नो सम काइंड ऑफ ट्रैकिंग हैपनिंग व्हेन इट कम्स टू compliances, एंड ऑल्सो द सेम tracker can be used for reporting to the senior management in your organization, so that they also have some visibility ki when it comes to compliances, whether everything is being taken care of in a timely manner, and if there are any
non-compliance, then at least it gets highlighted here, and it doesn't get missed out, and only at the time of audit we come to know कि अरे ये miss हुआ था. So all those situations could be avoided if we are tracking compliances periodically. So I'll be sharing these two templates with you. One is compliance tracker and also the employee investment declaration. जिनको भी applicable है, you can explore that. Okay. So before we move on to the quiz time, किसी के कोई questions है इस सेशन के रिलेटेड अब तक? Dohit, can Yeah. I request one question? मतलब this is not related to this session, but मुझे जिनको पूछना है, जिनको 12A और ATG मिला है सर्टिफिकेट, तो उनका कितने टाइम में मिला है और उनको इनकम टैक्स से क्या नोटिस आया था और क्या उन्होंने कुछ वहां पे आगे कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाए वगैरह, क्या ऐसे क्या प्रोसेस हुआ था, क्या मैं जान सकती हूँ प्लीज? यस यस श्योर. कोई Then okay, आंसर करना yeah. चाहेगा किसी ऑर्गेनाइजेशन आई को जिसको थिंक मिला वेरी है? क्विकली शलाका, इधर कोई अगर मुंबई वाला होगा तो उधर ही वही आपको हेल्प कर पाएगा, एटलीस्ट उसी का रिस्पॉन्स आपको हेल्प करेगा. नॉन, अच्छा. बिकॉज हर सीआईटी अपना अपना अलग अलग कर रहे हैं, तो देयर आंसर्स मे नॉट रियली हेल्प यू इफ यू आर ट्राइंग टू अचीव समथिंग. There are a lot of organizations that are waiting. So at this point, yeah, like if anybody is from Mumbai, they can answer this. Yeah, जिसको मिल thank you, गया है. Ravi. कोई है मुंबई से कोई ऑर्गेनाइजेशन जिनको मिला है 12 ATG इस बैच में? डजंट लुक लाइक चलाका. Okay, okay. Thank you. Thanks a lot, Dohit and नो Ravi. प्रॉब्लम. ठीक है, विल हैव अ क्विक क्विज सेशन. सो आई होप सबको अब तक अभी टीम सबके पता है. सो फर्स्ट क्वेश्चन टू टीम 1 is registration under section 12AB is primarily required to what under the following four options: receive CSR funding, claim tax exemption, open bank accounts, or avoid GST? B. Claim tax exemption. Correct. Team 2, which form is required to be filed for reporting donor-wise details of donations for giving tax deductions? 10BE, 26Q, 10B, or 10BD? Team 2. T. NBD. Perfect. Yes. Team 3, anonymous donations are taxed at a special rate because they are illegal, donor identity is not available, corpus, or they are foreign contributions. Team 3. I think टीम 3 किसी को पता ही नहीं कौन है टीम 3. टीम 3 हमारी अवेलेबल बी. नहीं है. B. बी. B. Donor identity is not available. Perfect. Yes. Team 1, inter-charity donations are treated as application of income only if given to any organization, given in cash, given to registered charitable organization, approved by auditor. Team 1. They are writing C in the chat box. So Okay. Yeah, that's right. Okay. Team 2. Failure to deduct TDS on eligible payments may result in only interest liability, 30% disallowance of expense as application, cancellation of registration, or there is no impact. B. B. That's right. That's right. Team 3, books of accounts for a non-profit must be maintained only at head office, only electronically, at registered office or notified place, or only during audit. C. At C. register office or notified. That's right. Perfect. Yes, that brings an end to today's session.